Hi guys, so today we are going to do the question simplified fraction. So given integer n, return a list of simplified fraction between 0 and 1 inclusive such that the denominator is less than equal to n. The fraction can be in any order. So simplified fraction, what does simplified fraction means? Let us understand first. Fractions can be simplified by dividing the number and the denominator by their greatest common factor. So this is the GCD basically. So if we say that the simplified fraction of this number will be, when I'm reducing it to the smallest form. So it will become 2. So what we are required is we need all fractions which are less than 1. So 0 to 1 we need. So let's take some other example to understand what simplified fractions are. So if we take 6 divided by 24. So we can see that it can be divided by 2 first of all. So on dividing the denominator and numerator by 2, we get 3 by 12. We further see that this can be reduced further. So 1 by 4 is the simplified fraction. So this is less than 1 and greater than equal to 0. Less than equal to 1 and greater than equal to 0. So this is the simplified fraction for the number 6 by 24. Fine. So this is what we are required to see, to tell as the output. So if we see for the sample input n equal to 1, we have answer 1 by 2. And for n equal to 3, we can see that the denominator starts from greater than 1, that is 2, up till the number 3, and also the numerator goes from 1 up till n minus 1. So what I am saying is, numerator is going from 1 to n minus 1, and the denominator is going from 2 onwards to n. So this is our main observation right now. And as we see that we have read in the definition of simplified fraction that fractions can be simplified by dividing the numerator and denominator by their greatest common factor. So basically, what I am required to tell is any two numbers which have, this is the most important point of the question, please understand it. Two numbers which have GCD equal to 1. So these two numbers can be included as our answer. So I hope you guys are aware of what GCD is. Let me tell you once. So like GCD of, if we are taking GCD of 15,3. So how do we do it in mathematics? It's like we write 15 inside this and we divide it by 3. So 3 5s is 15. So we on the first step we get the result as 0. Let's take some other number like which is not divisible. Suppose 15 and 4. So in this case we are dividing 15 by 4. So 15 3s are 4, 4 3s are 12. Then we are left with remainder 3. Then we divide it by this number. So this number is divided by the remainder of initial a and b. So the remainder was 3. So we divide 4 by 3 now. So this would come out to be 3 ones are 3. So the remainder is now 1. Fine. And we would go up till when the remainder becomes 0. So now again the remainder is 1. And we would divide the number 3 by 1. So here we get a perfect
remainder, that is 0. So in this case, the value that we are dividing is the GCD of the number. Fine. So we can see, like if we are calculating GCD of a comma b, then in the next step what we are doing is, like, see, uh, a was 15. The thing we write inside the division is is value a, and what we are dividing it by is value b. So it is 4 here. Fine. Then we are dividing 4 by 3. Fine. So 4 is being divided by 3 now in the next step. So we can see that we are calling on function b modulo a. We are calling on b comma a modulo b. Up till when? Till the time this value becomes equal to 0. Fine. So let's see the code. So जैसे मैंने बोला कि हम वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग लेंगे, एक आंसर जो कि हम रिटर्न करने वाले हैं. देन अगर इफ n इक्वल टू 1, जैसे अभी हम इधर बेस केस देख सकते हैं, जैसे अगर हमारा n इक्वल टू 1 है तो हम एक एम्प्टी भेज देंगे आंसर में. तो इधर हम सिंपली आंसर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर. वरना हम दो लूप लगाएंगे, इंट i इज इक्वल टू, अब हमने जो डिनोमिनेटर, अब हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारा डिनोमिनेटर चलेगा 2 से n तक एंड न्यूमरेटर हमारा चलेगा 1 से n-1, मतलब डिनोमिनेटर तक. लाइक ये हमारा होगा डिनोमिनेटर तक. फाइंड डिनोमिनेटर -1 तक. तो हम चलाते हैं डिनोमिनेटर को 2 से, डिनोमिनेटर n तक जाएगा एंड डिनोमिनेटर प्लस प्लस होते रहेगा. फिर हम बेसिकली यहाँ फ्रैक्शंस बना रहे हैं. हम न्यूमरेटर कहाँ से चलाएंगे? 1 से. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस प्लस. बेसिकली हमने क्यों किया है ये लेस देन डिनोमिनेटर? क्योंकि हमें फ्रैक्शन लेस देन इक्वल टू 1 बनाने. फाइन. अब हम चेक करेंगे क्या जीसीडी ऑफ, अभी हम ये फंक्शन बनाएंगे, जीसीडी ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, सो हम डिनोमिनेटर कॉमन न्यूमरेटर भेजेंगे. इक्वल टू 1 है तो हम अब अपना आंसर में जो ये स्ट्रिंग है उसमें हम स्ट्रिंग डालेंगे. वेक्टर है उसमें स्ट्रिंग डालेंगे, तो हम स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं, स्ट्रिंग टेम्प. अब ये किस फॉर्म में है? न्यूमरेटर स्लैश डिनोमिनेटर. तो हम ये क्रिएट करते हैं टू स्ट्रिंग. पहले न्यूमरेटर आएगा, फिर हमने स्लैश डाली, फिर हम टू स्ट्रिंग डिनोमिनेटर करेंगे. राइट. और हमने आंसर डॉट पुश बैक कर दिया टेम्प में, एंड आंसर एंड में हम रिटर्न कर देंगे. अब हम जीसीडी का फंक्शन बनाएंगे, इंट जीसीडी इंट ए इंट बी. अब जैसे मैंने बताया था, जब ये सेकेंड वाली वैल्यू, मतलब हमारा रिमाइंडर अगर मतलब ये वाली वैल्यू अगर हमारी 0 हो जाती है, इफ बी इक्वल टू 0, ये हमारा बेस केस है, रिटर्न ए. एल्स रिटर्न क्या करेगा? जीसीडी ऑफ, देखो मैंने क्या बताया था, जो पहले a कॉमा बी था वो नेक्स्ट कॉल में क्या होगा? b कॉमा a मॉड b. तो जैसे मैंने समझाया था, जैसे a हमारा 15 था, b हमारा 4 था. तो अब हमने क्या किया? इन दोनों का डिवाइड किया, जो भी मॉड्यूलो आया, मॉड्यूलो हमारा आया था 3. राइट. तो 3 हमने b बना दिया, 3 हमने b बना दिया. लाइक ये हमारा 3 वैल्यू आई तो हमने ये b बना दिया, एंड जो a था वो हमने उसको b के इक्वल कर दिया. तो यही करेंगे हम इधर, b कॉमा a मॉड b. फाइन. सो देखते हैं कोड चलता है कि नहीं. सो इसके लिए सही है 4 इनपुट के लिए.
एक बार हम आउटपुट को एनालाइज कर लेते हैं पहले। देखो जैसे 4 है हमारे पास, तो हमने कहाँ से, मैंने क्या बोला कि हम न्यूमरेटर चलाएंगे अगर 4 है हमारा, तो हम पहले डिनोमिनेटर की बात करते हैं। हम डिनोमिनेटर चलाएंगे, हमने डिनोमिनेटर चलाया 2 से n तक, सही है, 2 से n तक चलाया। और न्यूमरेटर हमने चलाया हमेशा 1 से डिनोमिनेटर की वैल्यू तक, जो कि ये ग्रेटर देन 1 ना आ जाए। फाइन, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसे सबमिट करेंगे। तुम्हारा कोड सही चल रहा है एंड मेमोरी एफिशिएंट है, तो हमारा ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में हुआ है, सही है। सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। बाय।